Ladies and gentlemen, we have, thank you very much. Can we get the windows fixed? Ramesh Sabharwal is with us on the debate. We have Savio Rodriguez, Renu Mittal, Waris Pathan. We've just had an interesting debate. Dinesh Jotwani is out of the frame. Producers, please tell him to come back into the frame. Taking too long, we go back to the long shot. Let's go back to Amit Shah and then we'll come back when your windows are fixed. Ramesh Sabharwal, my straightforward question to you is, you have lost this constitution debate very badly. कोई मतलब नहीं था पूरे constitution debate करने की, क्योंकि you gave the BJP an opportunity to expose you on how you have trampled over the constitution. This whole constitution debate, even people who did not know Renu Mittal, Waris Pathan today know the way in which the Congress party has misused, misrepresented and tried to trample over the constitution. So in a way, this is a CSR activity by the Congress party, Savio Rodriguez. Everybody now knows कि Congress party की असलियत क्या है. Dinesh Jotwani is a constitutional expert. He's been watching the debate. Mr. Jotwani, may I start with you? What do you think of the debate so far? What has it really achieved? Now, I think the biggest point that we should bring home is that this constitutional debate is taking place. It means constitution is alive. And both, I will say, from the leader of opposition and what the opposition mentioned, that the constitution is breaking down. They've given several examples of it. But I think the fact that we are able to talk about that the constitution is alive, there have been amendments that have taken place. There have been more than 100 amendments that have been taken place in the constitution so far. And all of it that we see are striving towards the main goal, which is given and enshrined in Article 21, which is the right to equality. Whether we see the amendments that have been taken place by either of the governments, whether they were when Congress was there in the power, or whether now also if we see, we see that these amendments have actually strived to have right to equality. Yeah. It is also towards the direction that there is a secularism in the country still alive. There have been even Supreme Court judgments that have approved the amendments that have taken place. So I would say that the debate is taking place. I saw Honorable Home Minister's speech right now. Yeah. A lot of that was political, but the point that he tried to make it out is that the amendments that were taken out earlier that were there were more communist driven, which were not in interest of the country. That is what the Home Minister was trying to bring about in his debate. But if we see overall, yes, I would say that most of the amendments that have been taken place shows, and they have been approved by the Honorable Supreme Court of India also. Yeah. In fact, that leads me on, Dineshji. I want to play, as I go through this debate on what happened today, I want to tell all our viewers that the highlight of today's constitution debate was the very long speech by the Honorable Home Minister Amit Shah. I will play some clips of Amit Shah's speech for those who may not have watched it, and then we'll debate. Debate one will be on the amendments brought in by the Congress. Here is the first clip, ladies and gentlemen, of Amit Shah. And please listen carefully, because this point I will start by debating next. Here's the first clip. दलों के चार संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी, और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया? मान्यवर उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। संविधान संशोधन नंबर 1, अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1
अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन, और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। कोई ये न समझे कि हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल है। हाँ, हमने हर संविधान का अभ्यास जरूर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऋग्वेद में कहा गया, हर कोने से हमें अच्छाई प्राप्त हो, शुभ विचार प्राप्त हो और शुभ विचार को स्वीकारने के लिए मेरा मन खुला हो। मान्यवर, हमने सबसे अच्छा लिया है, मगर हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई। So in that first clip it comes out, Ramesh Sabharwal, that the Congress party has murdered the constitution immediately after the constitution was brought in. And Renu Mittal, this murder of the constitution is something which is recorded. Arnab, No, I tell you. No. You see, we formed the constitution. It sounds we so fought against laughable. Britishers. The way we don't that, need a certificate of education. the BJP is going on attacking the Gandhi family and the Congress. It seems to be an obsession with them. No Why obsession. is that? Why? Put What is the Shazia great also on. insecurity? You are trying to bring in a bill today which has to be referred to the JPC because it could not happen, because the numbers were not there with the BJP. No, and the point is NDA. this. That is different. One minute. That you is. can't go on Renu, that is also constitutional. So boring, yaar. It's That is becoming also so constitutional. You see, what is Arnab. boring is. Well, it's so boring. Okay. What Now- he's going back to misguiding 51. the He's going to. Who is he's going to misguiding? the The year BJP, dot. Why they don't you didn't talk form- about the they president? didn't What participate in the freedom movement. They And didn't what they form want the to do with the constitution. And they are today The different teachers the what is the idea of a constitution. debate on the constitution. वो संविधान के बारे में नहीं बताएंगे। Talk is to Are you saying discuss. संविधान का जो हालत कर रखी है उसने 12 साल 13 साल तब It is a provision. तानाशाही बना रखी है Shah was इंडिया के so अंदर। That allows boring. for amendment. He was going on attacking And how Nehru. many He amendments was has going on Congress done? attacking the Gandhi family. 77 and Rahul Gandhi. amendments out of What the is over 100. obsession? तो मोदी जी ने कितने अमेंडमेंट किए? 10 साल में 29 अमेंडमेंट किए। Why don't they talk about हमने what is किया, देश के happening? हित में किए, Okay. This whole Okay, thing one- is becoming 77. farcical देश के now. हित में किए। I'm sorry. I'm so glad. One minute. Shazia Elmi is on the debate. One minute. Shazia Elmi, Ramesh Sabharwal ji, idhar dekhiye, she's to your right, and you can look straight to her on the left. I want to bring Shazia Elmi versus Ramesh Sabharwal right now, because Amit Shah said in his speech that जब संविधान की भावना को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए इस्तेमाल करने का प्रयत्न करता है, तो किस प्रकार की घटनाएं होती है यह भी मालूम चलता है। 39 संशोधन, काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से संविधान संशोधन किया गया, एंड इट इज अ फैक्ट, बिकॉज रमेश सबरवाल, द फर्स्ट अमेंडमेंट was brought in, and this is the Congress party. This Congress party, they brought in the first amendment to curtail the right to freedom of speech. Which means Nehru wanted to curtail freedom of speech. You brought in restrictions under Article 19(1)(a). All misleading. Who brought in 19(1)(a)? All misleading. Who brought in 19(1)(a)? All Who misleading. brought in 19(1)(a)? On 18 June 1951. Ambedkar ji said that
धर्म से ऊपर देश रखेंगे या धर्म को देश से ऊपर रखेंगे? 19 ये बीजेपी ये कर रही है, Who brought in- धर्म को ऊपर रखती है, देश को नीचे रखती है। यही संविधान में फर्क है। कांग्रेस का संविधान देश की आजादी के बाद संविधान, देश की। बीजेपी ने कभी पार्टिसिपेट किया है फ्रीडम मूवमेंट में? नेहरू जी की बात करते हैं, क्यों फ्रीडम मूवमेंट मिसयूज कर रहे हैं? 9 साल कारावास में रहे नेहरू जी। 9 years he spent his life in the कारावास, जेल में रहे। काला पानी में, अरे भाई, काला पानी अरे में, भाई, काला पानी में, भगवान से काला डरो पानी में, यार, कहाँ पे? भगवान से डरो। काला पानी में, काला पानी में, देश के लिए हमने काला जान पानी दी है। में, काला ये तो पानी में, कहाँ थे? काला पानी में। भारतीय जनता पार्टी के I am थे saying- कहाँ? ये तो पार्टी नहीं बनी थी, ये तो थे ही नहीं इस देश के अंदर। आप कब तक यही लाइन बेचते रहेंगे? क्यों सच्चाई बेच रहे हैं? रमेश जी, सच्चाई बेचते हैं। Ramesh Sabharwal is on the debate. Ramesh Sabharwal ji. Ramesh Sabharwal is on the debate, ladies and gentlemen. Please to clear right. Shazia Ilmi of the BJP Ramesh wants to ji. respond to you right now on the Constitution debate. Is Shazia Ilmi? you know, I feel so sad, Ramesh ji, a decent, upright person like you. Yeah. Today I has agree. to be in this state, trying to defend the Congress party. And for the first time, we are learning the truth about the Congress party. We are having, I'm so glad Rahul Gandhi brought in the Constitution debate. Because this has completely pulverized. You all stand pulverized, exposed, and completely open Because and we are fighting vulnerable against to dictatorship. what India will say as to how We you are sold fighting out, against dictatorship. how selfish and तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे self-serving हैं। Congress party and the Nehru-Gandhi dynasty has been, तानाशाह। and how you have compromised the interest of India and Indians many times over. आपको लगता है? So whether आप is the झूठा use of बोल- Article अंग्रेजों से आप लड़े 366, थे? आप इधर देखिए देश की ना, directly जेलों में बोलिए, हम गए directly थे। बोलिए। देश की जेलों में आप गए थे, हम गए थे, हमारे पूर्वज गए थे। हमने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमने देश को आजादी दिलाई है, 75 और years हमने देश के हित में जो 75 सालों में क्या आपने हालत कर दी है देश आपने कर दी है। और सुनिए, आपने गब्बर की 10 टैक्स साल लगा में, रखा है, पिछले 10 ईडी की साल रेड, में इलेक्ट्रोल ऐसी- बॉन्ड्स के नाम पे स्कैम, सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स की रेड, काला जादू, मशीनों का पूरा महाराष्ट्र रो रहा है। Shazia has to पूरा intervene, महाराष्ट्र please. रो रहा है। Mr. संविधान की It's okay. धज्जियां उड़ा दी। 1 minute. धर्म को ऊपर- Sure. धर्म को ऊपर कर दिया, देश से ऊपर कर दिया। ये है हालत, देखिए ये हालत, ये इंसान क्या सच्चाई हालत, बोलते हैं। सोचिए सच्चाई बोलते सोचिए हैं। what a state he's in. Directly सच्चाई- He's you can lost. look at him. सच बोलते हुए- No, you can deal with him. सच बोलते हुए पेट में दर्द Sir, होती the है। thing is today जैसे that मोदी जी की होती वैसे- है। आपको क्या हो गया है? सबरवाल जी आज आपको आप क्या हो सबर गया है? मुझे पता नहीं बुरा सर। लग रहा है ना आपको रमेश जी? सब पता चल रहा सच है, बोलते असलियत सामने आ गई, सच बोलते हैं। सच सामने आ गया। क्या सच आ गया? बुरा लग रहा है ना सच आपको? आपके सामने बुरा आया। लग रहा है ना? संविधान हमने बुरा लग बनाया। रहा है आपको? इधर देखिए ना, फेस हमारे सर, लोगों ने फेस सर। खून से आप बनाया तो है। उनको फेस भी नहीं सींचा कर है रहे। उसको। आपके लोगों ने खून से बनाया, से सींचा क्या है। किया आपने? देश को हिंदू आजाद कोड बिल में करवाया। क्या किया? हिंदू कोड बिल में क्या किया? क्या किया आपने बताइए? सुन- क्या हिंदू कोड बिल? आप लोग क्या कर रहे कहा? हो? अंबेडकर जी को आपने कितनी बार उनके खिलाफ ना सिर्फ उनका अपमान किया, अरे बार आप क्या लेकिन झूठा उनकी प्रचार जो कर सोच दे? थी, अंबेडकर और जी किस को- तरह से अंबेडकर जी इंदिरा को- गांधी One minute. सेक्युलर शब्द लाकर, अंबेडकर सोशलिस्ट जी- One minute. नेहरू गांधी और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का One minute. साफ दिखाता है Obsession है। 1 minute. खुदगर्जी। इंदिरा जी ने जान दी है देश के लिए। 1 minute. राजीव गांधी ने जान One दी है minute, देश के लिए। listen, don't interrupt. I'm very relieved because India can see what these 75 years have been. History The की- way- 1 minute. इतिहास And पढ़िए। no, Ramesh, you can't keep speaking over everybody. You have been exposed. Your party has been exposed. The fact Enough, is, viewers enough. today, Whether- Shazia, thank you. Just one intervention. Bringing in constitution amendment is allowed. There's nothing wrong. Renu, 1 minute. Renu, No, don't talk about all this, Shazia. 1 minute. Why not, Renu ji? You don't I let shouldn't me talk talk. I have facts. to go on. I shouldn't talk about facts. No, Uncomfortable facts. You only allow Inconvenient Bosses. truths. Who are Inconvenient bosses. truths that everybody Bosses. must know about. I'm so glad Amit Shah spelled it out done something and said good. 1 minute. 1,000 times. We will say 1,000 times. We will not let all of you compromise the constitution and our democratic values. No matter what, Renuji, you can run after a family. You can I get a speak for one feeling, I family. get a feeling. We will not let them run short over the rights of Indians. Sorry, I'm sorry. You have been exposed. You are done with. It's passé. Your time is over. No, your time is over. What is happening? It is. This is the. This Don't is. talk about. We have to say cheers to these times. वैसे भी yesterday I saw a clip of an interview with the politically shameless Manishankar Iyer.
एंड ये कल्चर देखने की जरूरत है. ये पॉलिटिकली शेमलेस मणिशंकर अय्यर कहते हैं मैं कोई नहीं हूं. आई एम नॉट अ मास लीडर, आई हैव नो बेस, आई हैव नो नथिंग, आई ओनली अ पेट्रोनेज. यानी कि राजीव गांधी मेरे जजमान थे और गांधी परिवार मेरा जजमान है. ये जजमानी अप्रोच, यू नो, this client approach, client patron relationship, 1 minute, this chamchagiri culture, this chamchagiri culture of the Congress party, chamchagiri culture of the Congress party, where a person says, I have nothing, I'm nobody, I'm just a person with patronage, that's all I have. Anyway, next question is this, next question on the debate. 1 minute, अभी जो what is very, very important right now, ladies and gentlemen, lines open and Waris Pathan. Waris Pathan on the debate. Shazia versus Waris. फक्र के साथ कहती हूँ कि मैं भाजपा की नेता हूँ. वारिस, आप बताइए, आप झूठ में पत्रकार है ना, अपने बारे में बताइए आप. रेणु जी. Okay, 1 minute. Can I just say one thing? Be careful with your words and the allegations, sir. I only bring one thing to account here today. That Waris, if you look at this, I want to make a small point. Everybody has a right to bring in amendments. But why are you bringing the amendment is what is important. Nehru brought in an amendment. Please listen to me carefully, everyone. Nehru brought in an amendment to curtail the right to freedom of speech. Yes. Through 19(1)(a). Correct. Congress brought in an amendment also to extend the Lok Sabha tenure to 6 years with the 42nd amendment. 5 साल के tenure को 6 साल कर दिया. अपना. They brought in an amendment to extend their own term. 1 minute. What is? BJP brought in an amendment, for example, the 104th amendment, which extended reservation for scheduled caste and scheduled tribe. 103rd amendment for EWS reservation for economically weaker sections. 102nd amendment to make the National Commission for Backward Classes, to make it constitutional. What did you bring in amendment for? To make sure that Shazia Ilmi's freedom of expression is curtailed. To make sure that your power is extended. To kill the constitution. To kill the constitution. To kill the power of judicial review. To kill the power of judicial review. 1 minute. In fact, ladies and gentlemen, I want to ask Advocate Waris Pathan. I want to ask Advocate Waris Pathan, who's behaving like a chamcha of the Congress on the program tonight, whether it is true or not that Indira Gandhi put under Schedule 9 any bar on judicial scrutiny. Indira Gandhi put a bar to any judicial scrutiny of the Representation of People's Act. Election Commission. Let me remind you, Mr. Arnab Goswami. Are you a lawyer? Let me remind you, you are the chamcha of Modi. I am. Are you a lawyer? Spokesperson of Are you a lawyer? Let me tell you. Are you a lawyer? Are you a lawyer? I don't need a certificate. Are you a trained advocate? Are you a journalist? Are you a trained advocate? Or a BJP spokesperson? Are you a trained advocate? Are you a journalist? No, the point is, if you are a trained advocate, okay, Shazia versus Waris are on the debate right now. Shazia versus Waris on the constitution debate. भाई मुसलमानों की बड़ी फिक्र है ना. Recently इस्लाम we खतरे में है, celebrated the मुसलमान Constitution खतरे में Day. है, लेकिन शाहबानो केस में जब एक बुजुर्ग महिला की इज्जत की बात थी, रेगुजर की बात थी, मेंटेनेंस की बात थी, तब मुसलमानों की फिक्र नहीं थी. मुस्लिम वुमेन्स बिल की जब बात आई, तलाक की बात आई, तब मुसलमान औरत जो थी ना, मुसलमान नहीं थी, तब वो नहीं थी. सुनिए वारिस भाई, आपने सेक्युलरिज्म का जब मजाक उड़ाया है ना, आपने जिस तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए, I find it disgusting. Whether it is the directive principles, whether it's Article 44, whether it's Ambedkar's, whether is to do fact check of certain things. Waris, we can't speak like this over each other. आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ. What about you? So you have to keep quiet. You have to keep quiet and shut your मैं mouth. चुप रहूंगी, उसके बाद आप चुप रहेंगे. ये shut your mouth वगैरह मत बोलिए. ये shut your mouth मत बोलिए. Shut your mouth मत बोलिए. There is no need. आप ठीक से बोलिए. Shut your mouth बोलने की जरूरत नहीं है. Don't say shut your mouth. Shut your mouth नहीं बोलते. नहीं मगर shut your mouth मत बोलिए. आप shut your mouth क्यों बोल रहे हैं? Why are you saying shut your mouth? Is that the way to talk to a lady? You say shut your mouth? बीजेपी क्वालिटी का गला घोटती है.
Yeah, because she's going on. No, but watch your language, man. I'm asking some very valid questions. अरे you speak for Muslims, ना? तो मुसलमान औरतें क्या मुसलमान नहीं होती? नहीं, Muslim women are not Muslims. I'm asking you a question. Oh, yeah. Are they not Muslims? Don't. No, what is it? What is it? Play woman victim card. Why Woman not? card, oh. I will speak about Muslims, I will speak about women, and I will speak about Islam, and I will talk about secularism. I will expose communalists like you. I will expose communalists like you who work against Muslim women, Muslim community, reform in the community. What is he saying? इस्लाम को फॉलो करो, रिलीजन को फॉलो करो, खाली शादी नाम लिख दिया, मुसलमान हो गई। आप किससे कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? Oh God! So are you saying that I'm not a Muslim? आप अल्लाह ताला बन गए, आप नौज़ुबिल्लाह खुदा बन गए, क्या आप कह रहे हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ? अबे आप ये कह रहे हैं आप अल्लाह ताला बन गए, क्योंकि बीजेपी में कह रहे मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता है, वो मुसलमान नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं? ये है देखिए, He's saying that because she's a national spokesperson of BJP, she's not a Muslim. I'm very proud to be in the BJP, and I'm very proud to be a Muslim, and I'm very ashamed to have somebody like you call himself a Muslim and use my politics and my choice of politics against me. And you're nobody, you're no God, you're no Allah. So it's your time for you to be quiet and respect your religion, respect your constitution, and respect women. It's for you, my dear friend. Learn to respect people. Learn to respect. And Quran Sharif does not mention BJP anyway. Waris Pathan losing the debate tonight. Waris Pathan. जब आप हार गए ना भाई साहब, आप शिकस्त हो गई आपकी, Waris Pathan. इसीलिए आप पर्सनल हो गए. Because you can't match me on point, you can't match me on substance. You don't know what to say because I've caught Today I you. noticed one thing, and all of us noticed tonight, including you, Waris Pathan, that the BJP is on the front foot after the constitution debate. The BJP has gone for the jugular. The BJP is very aggressive. The BJP is not taking it lying down. The BJP has spoken about Soros. The BJP has spoken about the Edwina Nehru papers. And the BJP has called you out for killing provisions of judicial review in the constitution. मुसलमान वाली, Our next... को एक हरकत तो बताओ मुसलमान वाली, को एक आदत तो बताओ मुसलमान वाली। No, let him go. मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, आप खामोश बैठे थे, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आप मुसलमान क्या कह रहे हैं? क्या बात है मुसलमान वाली? आप ये मुसलमान वाली बात है? नहीं, सुनिए वारिस भाई, मैं तो तमीज से बात कर रही हूँ। सुनिए, नहीं वारिस भाई सुनिए, आप सुनिए भाई साहब, सुनिए, आप हिजाब की बात करते हैं, आप बात करते हैं ट्रिपल तलाक की, और वो चीज जो कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं, आप तो कुरान शरीफ भी नहीं जानते भाई साहब। सुनिए वारिस भाई आप फंस गए, आप खिसिया गए हैं और इसलिए फंस रहे हैं, और आप पर्सनल जो रिमार्क्स कर रहे हैं ना भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह ताला is my judge, and Allah is my judge. Very personal remarks. Shazia, 1 minute. I condemn the very personal remarks and attitude and the loose language that has been used typically by Waris Pathan against Shazia Ilmi today. The fact of the matter is, and I have callers tonight. Because I know Quran better than you. Because I know triple talaq is not part of Quran. Because I know hijab is not part of essential dress of Quran Sharif. That's why I fought you. You're a fraud. You're a fraud politician. Totally communal. That's who you are. Anti-women, anti-religion, anti-Islam, anti-Muslim women, and anti-constitution. Okay. And you have been caught, my dear friend. Okay, we are taking Narendra Joshi from Pune on the debate. I don't know if Narendra Joshi has been watching the parliament debate on constitution, but I'm sure you're watching this one. What do you think, Narendra? Which side has the edge? Sir, I have been, Arnav, good evening. Good evening, sir. I have been watching the parliament debates very sincerely, and I watch your TV debates also. I am requesting you to eliminate these the people who are sitting on the right side of yours, because they are not adding to any knowledge of the people. They are just fighting, No, you see, and even that is not entertaining also. I understand your sentiments. I have told Waris Pathan. Useless one. I have told Waris Pathan to behave himself, but unfortunately, Mr. Joshi. Mr. Joshi. Sitting on your right side, No. they are not adding Mr. to Joshi, any knowledge. Mr. Joshi, I understand. Waris Pathan, what are you saying? Please, do you understand the sentiments of I my am viewers telling Arnab who are finding Goswami you to uncool? behave yourself.
Stop calling chamcha. You are a biggest chamcha of Narendra Modi. Yeah. So, you know, Mr. Waris You are Pathan. biggest chamcha of Mr. Narendra Waris Modi. Pathan, you and are. I tell you on your Right. face. Mr. and Waris on the Pathan, national you are TV, against the on your constitution. channel, You're a on communal your person. debate. You I only say speak for that Muslim we are interests. direct. You are a party that only represents Muslims. You should not be allowed to I even speak fight about an the election. country. I speak about And you the can't even, Constitution. despite all your communalism, you can't even win a municipal election. You are anti-Muslim. You could not even You win are an MLA seat last time. anti-Constitution. You are anti-democracy. You could not even get an You are MLA seat last time for yourself. You are So a keep non-secular all this person. attitude at home. You are Show this attitude at home. Election. I at least contested. You never contest. Yeah, I'm not Modi will interested never in give you a contesting. ticket to contest. Yeah, Modi will never Mr. let Waris that Pathan show. admits that he You will loses never let election. Rajya Sabha. Mr. Waris You will Pathan, never get Mr. Waris Pathan You will never is an get expert in losing ticket. elections. You will not Now, get a corporation ticket. because nobody believes you. will 1 minute, viewers, I'm going before I go to Rohit from Pune. I'm taking a second clip. I'm taking a second clip. I'm taking a second clip of Amit Shah. A second clip of Amit Shah. 1 minute. A second clip of Amit Shah from today's Parliament debate before I take the debate forward. Second clip of Amit Shah, please. आपातकाल अभी बड़ी बड़ी उद्दात भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है माननीय? क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए। लाखों लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वो ही कानून होगा। और क्यों किया? देश पर आक्रमण हुआ था क्या? देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। अपनी कुर्सी जाने वाले, चुनाव नहीं कराना था। और मान्यवर, जब पार्लियामेंट, जब इसको चैलेंज किया गया और न्यायालय में, सर्वोच्च अदालत में जब चर्चा चली, तब उन्होंने कहा, नीरज डे को पूछा कि आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस सर। साहब, कोई भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। नीरज डे 11 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे, एक यस सर कहने का। Ladies and gentlemen, very shameful. और हिटलर ने, शाजिया, एडोल्फ हिटलर ने 4 या 5 लाख लोगों की नसबंदी की थी, फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन। इंदिरा गांधी ने और उनके सुपुत्र संजय गांधी ने 62 lakh, 62 lakh Indian men were forcibly sterilized, 15 times more than Hitler. You are destroying the Indira Gandhi broke Hitler's record in the mass sterilization of people, and these people talk about human rights. Quiet, Waris Pathan! Quiet! Quiet, Waris Pathan! Quiet! इंदिरा जी Quiet! पूरे बहुमत के साथ जीत के आई थी। क्या देश की जनता बेवकूफ थी? क्या देश की जनता बेवकूफ थी? कितना झूठ बोलोगे आप लोग? 1980 के अंदर मैंडेट के साथ, 1984 के अंदर मैंडेट के साथ फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन बोलने की हिम्मत है? बोलिए, क्या बोलना है आपको? ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इंडिविजुअल्स Between the two. कोई वॉलंटरी था? Voluntary. जो आपने फोर्स नहीं किया था? Voluntary. फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन, संजय गांधी के वक्त में देवर फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन
organizations. और सुनिए, संजय गांधी ने तो ट्री प्लांटेशन की बात भी करी थी। संजय गांधी ने भारत के अंदर करप्शन की। Did he do more forced sterilization than Never, Hitler? never, Than Hitler? never, Than Hitler? never. Than Hitler? Did Indira Gandhi and Sanjay Gandhi break Hitler's record? Hitler. More than Hitler. More than Hitler. Did you do more sterilization than Hitler? Did you do mass forced sterilization of 15 times more than Hitler? 6.2 million Indian men were forcibly sterilized by Sanjay Gandhi, Indira Gandhi and the Congress Party. You broke Hitler's record. You broke Hitler's record. I am telling the people of the country the truth. I am telling the people of the country the truth that you broke Hitler's record by 15 times. Congratulations. आप वहाँ की जनसंख्या को हमारे से कंपैरिजन कर रहे हो। बुरा लग रहा है ना बात? सब सामने आ रहा है ना? बुरा लग रहा है बात आपको? ज्यादा जनसंख्या थी तो हमने स्टेरिलाइजेशन कर दी। I am telling you this is what they did. This is the real case of the Congress party. And he supported 2 days back supported emergency. Supported emergency. Supported emergency. अब क्यों नहीं कराते? चुप क्यों रहते? आप कराओ ना। रामनी बताइए। सरकार में बैठक करवाओ। नहीं, आपकी सरकारें नहीं है। आप तो कर रहे हो। आपकी सरकारें नहीं है। देश को बांट तो रहे हो, देश के टुकड़े कर तो रहे हो, देश को तबाह करने में लगे हो। इनकम टैक्स, जबरदस्ती टैक्स कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम सब कुछ खत्म कर दिया। छोड़ा क्या आपने देश में? एक डिक्टेटरशिप। अरे आप अडवाणी के लॉयल नहीं हुए, एलके अडवाणी को मार दिया आप लोगों ने। जीते जागते इंसान जो आपको लेकर आया। देश की सत्ता, देश की फ्रीडम मूवमेंट में अंग्रेजों के खिलाफ कहा थे आप लोग? वही बोले आ रहे हैं। आप कहा थे? कांग्रेस पार्टी कहा थी? एडविना माउंटबैटन के साथ थी। एडविना माउंटबैटन ने सिफारिशें करी थी। बुरा लग गया ना? बुरा लग गया ना? एडविना माउंटबैटन के साथ थे आप। नेहरू जी क्या कर रहे थे? वो खत कहाँ है? एडविना वो खत कहाँ है भाई? एडविना के जो खास खत थे वो कहाँ है? कितनी फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी देश के लिए, बताइए ना। शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। छुपा क्यों लिया? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बदनाम, अरे कितना बदनाम करोगे देश को? देश को बदनाम किया है आपने, भारत को बदनाम किया है। 1 minute. Ramesh Sabharwal, before I get to my next caller, let me tell you that it is fantastic today. It is fantastic. 1 minute. I want the people of the country to know the horrors of the emergency of which the author of the Congress party and people like Ramesh Sabharwal, Manishankar Ayyar, Sonia Gandhi and all the other chamchas of the Congress party, 140,000 people, political adversaries, journalists, activities, writers, citizens were all put in jail. Press freedom was removed. Judiciary's powers were taken away. Illegal detention was made. Maintenance of Internal Security Act was put in. 6.2 million Indian men were castrated by this party. By this party. अरे इन्होंने tomorrow. I'll tell you one thing. Now they want to threaten as much as you want. You even change the preamble of the Constitution. The people of the country are with us. Don't threaten me. Every time you threaten me, I come out stronger. You did everything. You put me in jail. I came out stronger. You lost and we won. The preamble of the Constitution was changed during the emergency, and these people don't want the uncomfortable truths to come out. Shame on you, sir, for what you've done. Rohit is our next caller. Rohit, our next caller from Pune. Rohit, you've been on the line for a long time. What do you think? Rohit, before our next clip, we'll have Rohit on the line. Rohit. You should read history books. He's there. Yeah. Okay, Rohit, go on. You can hear me, right? I can hear you loud and clear. Go on, Rohit. Amazing. So I just have 3 points to make. The first point is I myself was not aware of the history as much as I am today. Yes. And I'm so happy that it's getting integrated into the national education policy. Point number 2 is what Waris Bhai is talking about so much. I have a lot of relation with Sambhajinagar, which is like the second headquarters. Can you repeat Sambhajinagar to him once more so he hears the name and doesn't try to change it? It is Chhatrapati Sambhajinagar. Correct. Thank you. And so it's not about the name, but what I wanted to just point out was
in both the recent elections, they were nowhere. Nowhere. And point number 3 I wanted to make was, and I'm really little curious as to Where were you? what it takes for... Don't talk lies. You have been asked a question on Constitution. What do you know about Sam? What do you know about Aurangabad? Don't shout at my viewer. Don't shout at Rohit. Don't shout at Rohit. Don't shout. Let the viewers speak. And the third point, Arnab, I wanted to make was, what is it that the Congress party holds that makes their supporters talk so much about him in spite of everything being out in the open? So I'm really curious. I mean, why would somebody support them so vehemently? Only 3 points, Arnab. So over to you. Thank you so much for your time. Mr. Abarwal, why should anyone support you? People know your truth. Why do you support the BJP? What have they done for the country? They're destroying the basic structure of the Constitution. By making such kind of laws now, they want to... we will save this one nation, country from one poll. 1952, 1957, 1962, 1967. One nation, one poll. Totally in accordance with the Constitution. Varis, you're wrong on everything. Varis, it's not that you're misogynistic. It's not that you're communal. It's not that you have such a horrible opinion of women, but also that your knowledge is so poor. You are so low on facts. That is a problem. I mean, it's... One nation, one election. One state to 4 phases, 3 phases election. And now you want to do one nation. And when it is going to be, now it's gone to JPC. It's gone to JPC now, you don't know anything. Shazia, problem is that you don't study. You don't know what the bill says. Varis, you know nothing about anything. And you're full of vitriol and anger. And you just expose yourself. I feel sorry for you. I feel sorry for you. Because when you have nothing to say, you talk about Allah. And you talk about Islam. No, don't use Allah. Don't use Islam. For your political gains, don't use it. Varis, you know nothing about anything. Okay, ladies and gentlemen, I'm taking my third clip where the Amit Shah talks about the Congress party trying to keep the country under a colonial hangover. The third clip of Amit Shah's fiery speech in Parliament today. Here it is. मान्यवर, जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने का संशोधन विधेयक लाए और 3 नए आपराधिक कानून भी हम लेकर आए। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये 3 कानून 160 साल बाद पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीएनएसएस और बीएसए के माध्यम से हमारी संपूर्ण न्यायिक आपराधिक न्याय प्रणालिका को भारतीयकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी, और वो कानून जो अंग्रेजों को राज टिकाने के लिए बने थे, वो कानून को समाप्त कर हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसका करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और आप तो कई साल तक अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी, वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। That point, Savio, is really shameful. I mean, I didn't know that the budget was started at 5 o'clock to suit British time. It's really shameful, Savio. I mean, these facts are now coming out. I think this constitution debate has been very useful. History को distort. I think it's been a thrilling history class. Has exposed the Congress, and most importantly, you see, in today's day and age, with the kind of technology we have, the communication we have, young India is getting to learn the criminality of the Congress.
Does she know the Constitution also speaks about For freedom years, of speech and they've been expression? telling the She people does not know that they've that. been doing. So why are you asking the right question to way. her? But we know that they have been subverting the Constitution. We know about the emergency. We know the way they are still suffering. You from know colonial about the hangover. Britishers. And now You know about the independence movement. You know what is the contribution of Gandhi ji? You know what is the contribution of Sardar Patel, Nehru ji, Indira ji? Yes, Sardar Patel. Good. You know. Good, very good. Ambedkar ji, good. Okay, Say that let me again. ask you. Let me ask you. स्पीच चला दो ना, राहुल गांधी की चलाओ. दिनेश जोटवानी Dinesh Jodwani, listen to me. Ramesh Sabharwal, listen to Dinesh Jodwani. Dinesh ji, is Muslim reservation is Muslim reservation based purely on religion constitutional? Is the idea of Muslim reservation constitutional, Dinesh ji? No. Dinesh ji, the question is to Dinesh Jodwani. Dinesh Jodwani. I straight away answer this question in a negative, but let me give you a little background that religion-based reservation is against Article 21, against What is that? Dinesh. Now, if I just mention the one judgment that has preserved our constitution throughout the decades has been the Keshwanandan Bharati judgment. And if we shepherdise, if we look at what this judgment says, it has been cited more than 10,000 times by the Supreme Court of India itself. And it says, basically it says two or three things. It says executive cannot change the constitution. It says Parliament cannot change the constitution, the fundamental, basic structure of the constitution, which is fundamental rights. And the third thing, which the most important this Keshwanandan Bharati judgment brings about, is the Parliament itself, tomorrow it passes a law on Muslim reservation, the question that you asked Arnav. Even Parliament, if it passes that kind of a resolution, and we saw that, it happened in Shahbano case also. Yeah. Even if judiciary makes a judgment which is against the fundamental rights, the fundamental structure, and what the fundamental structure is, all the pillars of the government shall be independent. And I feel that the debate that is going on in the Parliament and what Honorable Home Minister tried to bring about, the amendments that have been brought about so far by their government has been in consonance with the Keshwanandan Bharati judgment. So I want to now play what Amit Shah said about the Muslim reservation issue in tonight's debate. Yes. So let's play that clip, sir. Let's play that fourth clip. इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है, धर्म के आधार पर आरक्षण। ये गैर संवैधानिक है माननीय। संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माननीय। धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। संविधान विरोधी। मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है
जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है, क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। शाहजी, आई थिंक द क्वेश्चन विचित्र किस्म का सेक्युलरिज्म है। ये विचित्र किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। यूसीसी हिस्सा है संविधान का, लेकिन उससे आप सम्मत नहीं है। वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड एक्ट संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ आप हैं। या तो आप संविधान के साथ हैं या आप संविधान से के खिलाफ हैं, और आप बात कर रहे हैं संविधान की। बहुत ही विचित्र बात है भाई, संविधान के साथ हो कि उसके खिलाफ हो। मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन धर्म के आधार पर संवैधानिक तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन वो आप चाहते हैं। यानी कि जो संविधान में नहीं है वो आप चाहते हैं, लेकिन बात आप करते हैं संविधान बचाओ की। ये किस तरह के लोग हैं आप लोग? मतलब ये बुनियादी तर्क आपके अंदर नहीं है। संविधान के खिलाफ बोलते बोलते आप लोग जो है, आप बात करते हैं संविधान बचाओ की। आपने मजाक बना लिया है, आपने अपना मजाक बना दिया है। मतलब इट्स हिलेरियस। यूसीसी इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वक्फ इज नॉट। I will want Ramesh Sabharwal to admit on the program tonight. Why should I? That your basic agenda is Muslim reservation. Talking, you just want Muslim reservation. कितना misunderstanding, कितना mislead करोगे इस देश को? Am I then? कितना करोगे? How many times? Don't shout. How many times have you tried Muslim reservation since 2004? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। How many times have you? 1 minute. How many times have you tried to bring in Muslim reservation since 2004? 4 times in Andhra Pradesh alone. 4 बार झूठ आप बोल रहे हैं। Andhra Pradesh government of Congress made 4 attempts. They made 4 attempts. They made 4 attempts to implement Muslim reservation. देश को एक रखा, इस देश की रियासतों को एक किया नेहरू जी ने, पटेल जी ने। अरे डरो भगवान से, इस देश को कितना यूनाइट किया। जैसे अंग्रेज जानते थे कि देश टूट जाएगा, अंग्रेजों को मालूम था कि देश टूट जाएगा। कांग्रेस ने इस देश को तोड़ के रखा। अरे इस देश को मत तोड़ो। Hot debate tonight, and when I come back, why the government failed to get the One Nation, One Poll bill through in the Lok Sabha in its first attempt? When I'm back.